Welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject. In this lecture we are going to discuss numericals on spring. In last lecture we have studied different types of springs, its definition, application and spring connection types also. So we will move towards the next point, that is numericals on spring. Here we have the first numerical. A closed coil helical spring is used for the front suspension of automobile. The spring has stiffness 90 Newton per mm, that is the value of K, with the square and ground ends. The load on spring causes the deflection 8.5 mm. That means जब स्प्रिंग पे लोड अप्लाई होगा तो स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन कितना रहेगा 8.5 mm. एंड द रिमेनिंग सेंटेंस इज बाय टेकिंग द परमिसिबल shear stress of a material as 450 MPa. Find first quantity spring wire diameter and the second quantity length of spring. For that purpose we have given some quantities. Assume spring index is equal to 6 and G is equal to 80 into 10 raised to 3 Newton per mm square. This is our statement and we have to solve these two quantities, spring wire diameter and length of spring. Before going in details, we have to write the given data and what we have to find in details. Here we will write the given data and what we have to find by this statement. First quantity, that is K. It is the stiffness of spring. K is equal to 90 Newton per mm, that is the stiffness of spring. After that, the deflection after applying the load is 8.5 mm. So I will write here delta is equal to 8.5 mm. Then the value of tau is 450 MPa and spring index C is equal to 6. After that, the value of G is equal to 80 into 10 raised to 3 Newton per mm square. This is the given data. Also we have given as the spring is square and ground ended, and we know that when this condition is given in statement, that means two number of wounds are there which are inactive. So we will write here n is equal to n plus 2. This is the condition because here we have given in problem, that is the spring is square and ground ended. So we will use n is equal to n plus 2 value. So the inactive number of turns is equal to 2 here. And in the section of finding, we have to find the spring diameter, that is D, and the length of spring, that is L. Here this L length, it is a free length, so I will write here LF, that is free length, and this section we have to calculate. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है स्प्रिंग वायर डायमीटर. इसके लिए हमें W लोड यहाँ पे चाहिए, कितना लोड उस स्प्रिंग पे अप्लाई होने वाला है. तो ये लोड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग इनटू स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ K इनटू डेल्टा, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ K इज 90 मल्टीप्लाई बाय डिफ्लेक्शन 8.5 mm. So we will get the value of load W is 765 Newton. Okay, this is the value of W which is apply on spring. यहाँ पे spring जो है वो spring हम कंसिडर करते कि एक एंड पे यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे W वेट अप्लाई हुआ है. तो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस वैल्यू है उस पर डिपेंड रहेगा कि डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है. तो इसलिए हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया. ये पॉइंट हमने थ्री लेक्चर में भी डिस्कस किया था. W इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा. आफ्टर दैट
the first quantity which we have to find, that is the spring wire diameter, by using Wall's stress factor Kw. We know that the formula for Kw is equal to 4c minus 1 divided by 4c minus 4 plus 0.615 divided by c. This is the formula for Wall's correction factor, and now we will put the value for as it is. C, that means spring index, it is 6, which is given, minus 1 divided by 4 into 6 minus 4. Solve this quantity first of all, use the bracket properly, plus 0.615 divided by 6, and the final answer of Kw is 1.2525. This is the value of Kw. This is Wall's stress correction factor, and after that we will use the formula of shear stress induced in spring, that is tau is equal to Kw into, you have to write these formulas in your notebook also, Kw into 8 into capital W, that is load apply on spring, multiply by C divided by pi into d square. This is the formula for shear stress induced. Now we will put the value one by one. We know that the value of tau, it is 450, which is given in problem, is equal to 1.25. This value we have find by using the Kw formula, multiply by 8 into 765 multiply by 6, this is the spring index value, divided by pi into d square. Here the unknown quantity is only d square, so we will find the value of d and take its root, and we will get the value of d as 5.70 mm. That is round up, we will take the round up value as 6 mm. This is the diameter of wire spring. We have calculated first quantity. Then the second quantity is, second point is length of spring. Length of spring. You have to write all these points in your notebook also. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्प्रिंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमने फॉर्मूला देखा था, एल एफ इज इक्वल टू, दैट इज द फ्री लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सॉलिड स्प्रिंग प्लस डेल्टा मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, विच इज नथिंग बट 8.5 प्लस करेक्शन पॉइंट 0.15, दैट इज 50% allowances of maximum deflection. But we don't know the value of solid length, and the formula for solid length is equal to n dash multiply by d. Here we know the value of d. यहाँ पे हमने d की वैल्यू लास्ट पॉइंट में फाइंड आउट किए, दैट इज 6, पर अब हमारे पास n डैश की वैल्यू नहीं है. n डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्प्रिंग वाउंड्स ऑन स्प्रिंग. यहाँ पे हमें इनएक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2 दिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड ये पॉइंट हमने कंसीडर करके इनएक्टिव टर्न्स 2 कंसीडर किए थे. पर n डैश ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी n+2 की. तो अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग का, दैट इज डेल्टा. और ये फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 8 इंटू डब्ल्यू इंटू सी क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू डी, दैट इज डायमीटर, मल्टीप्लाई बाय एन. अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है 8.5,
W की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग द फार्मूला K इंटू डेल्टा, वो भी थी 765। C की वैल्यू है 6, G की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दी है 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। D की वैल्यू हमने 6 जो भी फाइंड आउट की थी, और यहाँ पे अननोन वैल्यू है N की। तो सारे वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इस फॉर्मूले में हमने सब वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद में हम वैल्यू N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो N इज इक्वल टू 3। आपको सभी वैल्यू जब कैल्सी में पुट करते हो, टाइप करते हो, तो ब्रैकेट, प्रॉपर ब्रैकेट यूज़ करना है आपको। और N की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, दैट इज़ 3। और अब हम उस फॉर्मूले के लिए, फ्री लेंथ के लिए, यहाँ पे N डैश की वैल्यू हमें चाहिए। तो N डैश कितना है? N डैश इज इक्वल टू N+2, दैट इज इनएक्टिव टर्न्स। तो N की वैल्यू है 3 + 2 इज इक्वल टू 5। N डैश की वैल्यू 5 आ गई। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में हम लेंथ, सॉलिड लेंथ फर्स्ट डिटरमाइन करेंगे। सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला है N डैश इंटू डी, ये हो गया 5 इंटू 6, इसकी वैल्यू आ गई 30 mm, ये हो गई सॉलिड लेंथ। और फ्री लेंथ का जो फॉर्मूला है, फ्री लेंथ इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ दैट इज LS प्लस डिफ्लेक्शन प्लस 15% ऑफ डिफ्लेक्शन अलाउंस। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 30 + 8.5 प्लस 0.15 इंटू 8.5, ये हो गया अलाउंसेस इन स्प्रिंग। और फाइनल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये आ गई 39.97। इसको हम राउंड अप कर देंगे 40 mm, 40 mm, ये हो गई लेंथ ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे हमने दोनों भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर दी। फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज स्प्रिंग डायमीटर, D इज इक्वल टू 6 एंड LF इज इक्वल टू 40 mm। ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है,